Hey fam, what is up? Welcome to KBB Fitness. So today we have Mr. Tejas with us on KBB Talks, and he has some inspiring story about himself, like starting from the steroid cycle and coming back to the natural cycle. So hey Tejas, how are you? Hi, so I'm doing fine. I hope you are fine too. Yeah, I'm good too. And what do you do right now? So for now, I was studying in Canada. I was in Canada for past 2 years. I just completed my studies. So right now I'm working full time. Okay. Before that, I was in India, and I was working alongside with my dad. And from how long you been in fitness industry? Fitness, I'd say it's approximately 7 years. So you started in India and continue till Canada. Yes, I'd say fitness is like my passion. Fitness को मैं नहीं छोड़ सकता चाहे कुछ भी हो जाए. So Okay. earlier it was just like जब मैंने शुरू करा था तो हर कोई इंसान इसीलिए शुरू करता है यार चलो ठीक है 12th क्लास खत्म हुई है थोड़े स्किनी लग रहे हो चलो थोड़ा मसल बिल्ड करते हैं थोड़ा अच्छा दिखते हैं and all that. But later on when as it said like when you start getting the results you get addicted to it. So that's what happened. तो हाँ मतलब इंडिया में काफी काफी ज्यादा इंडिया में काफी ज्यादा पैशनेट था यहाँ पे आके थोड़ा और पैशन और इंक्रीज हो गया बट हाँ डाउन द लाइन जब मैंने इंडिया में स्टार्ट करा तब मेरी जर्नी कुछ और थी अब मैं कनाडा में आ गया हूँ अभी मैं वर्कआउट कर रहा हूँ बट जब मैं इंडिया में वर्कआउट कर रहा था मेरा पर्सपेक्टिव मेरा थिंकिंग एंड वे टुवर्ड्स बॉडी बिल्डिंग वाज कम्प्लीटली डिफरेंट बट राइट नाउ आई एम लाइक मोर टू मेरा गोल आई वुड से लाइक मेरा गोल बॉडी बिल्डिंग से टोटली स्विच हो गया. Okay. So please I, share some views on steroid cycle with our viewers so that they I must know how you started and how you wave off from the steroids and come back to the natural. What was your strategy and how did it? so steroids, I would say, first of all, I'd say like कोई भी अगर steroids ले रहा है, they shouldn't be taking until and unless उनका कोई goal है, और मतलब एक major कोई competition है. Only then, if you're not competing, you shouldn't be taking steroids. This is one of the Okay. biggest I did. I would say that okay, I was dumb enough, and I didn't have the right knowledge and right guidance. So मैंने steroids काफी early age में शुरू कर दिए थे, which isn't a good thing. I would say कोई भी ऐसा ना I Correct. started at the age of around, I guess, 18, 19 पे मैं steroids लेना शुरू कर दिया था and मेरे दिमाग में वही था because again I was like results दिखते थे आपको बार बार ऐसा लगता है कि नहीं यार मेरे को results दिख रहे हैं मुझे चाहिए मुझे और चाहिए मुझे और चाहिए मुझे और चाहिए and then अगर आपको कोई ढंग की गाइडेंस नहीं देता आपको कोई कोई भी XYZ ट्रेनर हो कोई भी XYZ दोस्त हो आपको बोल देता है कि अच्छा तेरे को पता है स्टेरॉइड लेने से ये हो सकता है and then when you try it and then you see then you get to know okay steroids is a shortcut. I would say Correct. steroid is a shortcut, Yeah. but if it's done if it's taken in a good way and if it's taken only for bodybuilding competitions then it's good because आपका उस टाइम पे एम सिर्फ बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन है यू आर गोइंग ऑन द स्टेज यू आर परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज सो आपको आप until and unless you are not in a cycle not on gear you won't be able to look the way you should look on the stage Correct. and you won't be Correct. able to compete with the other competitors because आज की डेट में if you are going on stage you will find 100% of the competitors are on gear. एंड आज की डेट में जब मेरी भी सबसे बड़ी यही गलती थी मैंने बहुत अर्ली एज में स्टार्ट कर दिया बिकॉज मेरे पास एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी एंड मतलब अब जब जाके जब मुझे थोड़ी बहुत गाइडेंस मिली है थोड़ी नॉलेज मिली है एंड डाउन द लाइन जब मुझे पता चला था अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि वो मैंने अपनी लाइफ की शायद बहुत बड़ी मिस्टेक करी थी कि मैंने अर्ली एज में स्टेरॉइड साइकिल शुरू कर दिया था सो दैट वाज द Okay. बिगेस्ट मिस्टेक आई हैव एवर डन. So is there any influencing factor in that? Like somebody influenced you to have steroids and to have quick I results? wouldn't I wouldn't say that somebody influenced me. मैं किसी को के ऊपर blame नहीं करना चाहूंगा definitely because at the end of the day it was my choice. I wanted it. I wanted to look in a different way. So yes, वो मेरा अपना personal choice था. I wouldn't say I was influenced, but then again, I would say that I wasn't guided properly. अगर हाँ मुझे कोई सही गाइडेंस देता कि हाँ यार तू ये स्टेरॉइड ले रहा है मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे दोस्तों ने या कुछ और लोगों ने नहीं बोला कि हाँ भाई तू गलत कर रहा है. ऑफ कोर्स बहुत लोगों ने बोला यार तू गलत कर रहा है दिस इज नॉट द राइट एज एंड ऑल दैट बट हमें नहीं समझ आता बिकॉज हमें जब वो रिजल्ट्स दिख रहे होते हैं हम देख रहे होते हैं तो हमको होता है नहीं यार हमारी बॉडी में तो रिजल्ट आ रहा है हमें क्या है क्योंकि एट दैट टाइम यू वोंट बी सीइंग दोज साइड इफेक्ट्स और दोज नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑन योर बॉडी बट डाउन द लाइन व्हेन यू क्रॉस अ सर्टेन एज लिमिट तब आपको पता चलेगा कि हाँ यार इन स्टेरॉइड्स ने मेरी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम करी है या क्या क्या प्रॉब्लम कर सकते हैं बट अगेन मुझे प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी मुझे सिर्फ एक जैसे हम बोलेंगे
अपनी लैंग्वेज में चस्का था कि हाँ भाई शरीर बनाना तो बस मेरे अंदर वही फितूर था, वही आग आग थी, और मैंने स्टेरॉइड्स लिए और मैंने दबा के स्टेरॉइड्स लिए. आई वुड, बट अगेन एक सर्टेन टाइम, एक टाइम पीरियड ऐसा आया व्हेन आई फाइनली डिसाइडेड टू क्विट. एंड आई वुड से इसके पीछे बहुत 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 बड़ा हाथ होगा मेरे कोच का, तरंग भाई का. Because at that time he wasn't my coach. I was in India at that time, and I used to follow him. I've been following him from past 6-7 years now. His Instagram journey. Correct. I've been following from a very long time. So I saw that भाई ने एक वीडियो डाली थी जिसमें उन्होंने openly अपने steroid cycles के बारे में बताया था. And openly he said into the world that he is finally like he's on a path that where he's not going to be taking any kind of steroids now. So at that moment, it also hit me, and मैंने भी थोड़ा बहुत I went through a lot of his videos and I saw a lot of content, and then I finally decided that okay, this is not the right path for me. I got I would say enlightenment, and तब मैंने decide करा कि ठीक है, now is the time. I won't be taking any kind of drugs, and at that moment I decided कि ठीक है, अब steroids नहीं. This is not something that I actually want. Yes, when I was in India, I really wanted to compete. I wanted to go on a bodybuilding stage. But then धीरे धीरे करके जब मुझे मतलब मैंने इंडिया में काफी लोगों को देखा है, इतनी मेहनत करते हैं बेचारे, इतना ज्यादा बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में, they gave out 100%, and at the end of the day when you don't get a certain position on the stage, you feel completely demotivated. I wouldn't say that लोग उसको demotivation ही लेते हैं, कुछ लोग उसको motivation की तरह भी लेते हैं, which is a good thing. But then I realized that wasn't something for me, because मैं ऐसा इंसान नहीं यार, अगर if someday I took a lot of steroids, I look good, I go on stage, I compete, and then I don't get a certain position, I'll be demotivated. Because मैं मेरे बस की नहीं है दोबारा, अब मैं शायद बॉडी बिल्डिंग ही क्विट कर दूंगा, या मैं फिटनेस ही क्विट कर दूंगा. And I didn't want that. I want fitness to be a part of my life, like at least till the day I die. This is what I expect, and this is what I want from fitness. So what was the turning point? Like we nahi yaar, bas now no steroids, now let's just start with the natural diet. What was the turning point? एक होता ना हर के लाइफ में कि यार नहीं बस, and that's. मैं बोलूँ एक्चुअली मेरी लाइफ में से 2 टर्निंग पॉइंट्स आए. एक दोनों टर्निंग पॉइंट्स के पीछे एक ही इंसान का हाथ है, दैट इज तरंग चंडोला, और किसी का हाथ नहीं है. फर्स्ट टाइम जब मैं बताया था कि मैंने उनके भाई की वीडियो मैंने देखी, that was the first turning point. That was when I finally decided that okay, I'm off gear now. I'm completely off gear. And then I was in India also. जब मैं इंडिया में था, like I trained for at least 2 साल तक मैंने कोई steroids वगैरह नहीं लिए इंडिया में before coming here. And then when I came here also, then I was like completely natural. Though जब मैं यहाँ पे आया, I really thought of because at that time I wasn't training under Tarang bhai. I was doing everything on my own. So I really thought that okay यार चलो ठीक है, थोड़ा अपना छोटे मोटे स्टेरॉइड्स लेते हैं, क्लेन ले लेते हैं, अनावर ले लेते हैं, थोड़ा शरीर ठीक कर लेंगे. But then one day I was just scrolling through Instagram and I saw Tarang bhai's. It was during pandemic, जब इंडिया में pandemic शुरू हो चुका था. It was that time. Then Tarang bhai का एक post, एक story देखी, and he said I am taking clients. So that was the second turning point of my big fan. वो bhai is like my mentor. So I have been following from 6 years, and I just wanted one opportunity to train with him, and that was my chance, and that my opportunity, and that was my second turning point. मैंने उसी time mail करा भाई को, and उसी time I sent him everything, and the next day I got his mail. I spoke with him. We had a conversation on the phone and everything. He told me that okay, I'll be sending you a few forms. You have to fill that, and then वहाँ से I would say 2020 April में I started training with bhai. And it has almost been 1.5 years now, and I'm still under him. I'm still working with him. So that was my second turning point. And like down the line in this 1 year, I have learned so many things from him. I have learned so many things कि शायद मैंने अभी तक 7 साल में वो चीजें नहीं सीखी होंगी जो मैंने 1 साल में भाई के साथ रह के सीख ली है. But then again, हमने भाई ने मेरे साथ कोई ऐसा नहीं बोला कि कोई स्टेरॉइड चलाया हो या कुछ स्पेशल डाइट दी हो या कोई सप्लीमेंटेशन ऐसा स्पेशल चला, कुछ भी स्पेशल नहीं था. Everything was normal and everything can be used by each and every one of us. That's really good. That's really good. So you mean to say that if we get any proper guidance in the starting of the gym, so we can get rid of these traps which are in the markets? Definitely. If you're training under some coach who knows what he's doing, basically. आपको अब मैंने यार मुझे पता है इस स्टेटमेंट के बाद शायद बहुत लोग
गुस्सा हो जाएंगे एंड they won't agree with me. But I would say No, that no. इंडिया Please, में please come. मोस्ट ऑफ द ट्रेनर्स आर लाइक दैट कि उनको सिर्फ क्लाइंट के पैसे से मतलब है, उनको क्लाइंट की हेल्थ से मतलब नहीं है. Correct. दिस इज द Correct. मेन प्रॉब्लम इन इंडिया राइट नाउ. एंड ये फिटनेस इंडस्ट्री में एक बहुत 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 बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में कि लोग सिर्फ अगले बंदे के लुक्स पे जाएंगे, सिर्फ ये देखेंगे अच्छा ही थ्रेडेड, ही इज वैस्कुलर, ही इज मस्कुलर, ओके इस बंदे से ट्रेनिंग ले लेते हैं. वो बंदा भी बोलेगा हाँ भाई चलो ठीक है, तुम ये गियर चला लो, ये चला लो, ये चला लो, एंड यू लुक लाइक मी इन 2 months, which is completely bullshit. Correct. Completely bullshit. If you looking that jacked in just 2 months, then भाई वो डेफिनेटली आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है. यू आर डैमेजिंग अ लॉट ऑफ ऑर्गन्स इनसाइड योर बॉडी. हमें ये लगता है कि यार, मुझे भी, मैं अपने पर्सनल ओपिनियन से बोलूंगा, मेरे को भी ये लगता था कि यार दोस्त 2 महीने में बॉडी बन रही है, क्या प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम है, बट आपको वो प्रॉब्लम उस टाइम नहीं पता चलेगी, आपको प्रॉब्लम बाद में पता चलेगी. अगर 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 आपको एक अच्छा कोच मिलता है जो कि सिर्फ आपके लिए नहीं, आपकी हेल्थ के बारे में भी सोचता है, देन यस डेफिनेटली आप नेचुरली बहुत आगे एडवांस कर सकते हो. अभी तक मैंने मतलब अपने साथ मैंने ये चीज रियलाइज की है कि अगर मेरे को ऐसी गाइडेंस शायद 5-6 साल पहले मिली होती तो आई वुड हैव बीन एट माय पीक परफॉर्मेंस राइट नाउ. बट मुझे वो नहीं मिली. बट ठीक है, नो रिग्रेट्स, जो भी हुआ अच्छा हुआ. आई लर्नड अ लॉट. आज की डेट में ठीक है, अब मैं तरंग भाई के साथ हूँ. Failures lead to learning. एग्जैक्टली मतलब आज Correct. मैं अगर तरन भाई के साथ हूँ, सो आई फील ग्रेटफुल that I am with a certain person who is actually concerned about my health. He is concerned about what I am eating. He's concerned about how the way I'm looking and feeling, not just the way from outside, but from the inside as well. Inside out. Exactly. So as I said, like natural bodybuilding या natural physique बनाना, I would say is not really hard. मैंने हमारे यूथ में एक ये चीज आज की दिमाग में बसी पड़ी है कि यार नेचुरल बनाना इज कम्प्लीटली इम्पॉसिबल. भाई नेचुरल तो कुछ हो ही नहीं सकता. Because they don't have patience. दे डोंट हैव पेशेंस. एंड एग्जैक्टली अगर आपको इस गेम में रहना है, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग इन पर्सपेक्टिव ऑफ बॉडी बिल्डिंग, मैं सिर्फ एक नॉर्मल फिटनेस की बात कर रहा हूँ. अगर आपको नॉर्मल फिट भी दिखना है या फिटनेस को भी मेंटेन रखना है, you will have to stay patient and you will have to show dedication and consistency. So, how do you choose the good coach? Like, what was the ignition point in your mind that Taran Bhai will do it? I would also recommend a few names. I'll recommend them later. But I would say कि यार अगर आप beginner हो, so सबसे पहले educate yourself. Don't just go towards a trainer and expect to expect everything from him. अगर वो कुछ आ भी रहा है, then you should have that knowledge that okay, basically what that guy is teaching. And I'm right now I'm talking about the basic knowledge, your macros, micros, carbs, fats, proteins, ये होता क्या है. आपको पहले ये हो. यू आर ऑल ठीक है यार, तुम बोलते हो कि भैया मेरे को जिम जाना है, आई नीड अ ट्रेनर, आई नीड अ नाइस ट्रेनर, ओके, बट एटलीस्ट यू शुड नो योर बेसिक थिंग. अगर आपको बेसिक थिंग्स ही नहीं पता होगी तो आप अपने ट्रेनर से भी, आपको पता क्या चलेगा कि आपका ट्रेनर सही बता रहा है गलत बता रहा है. एंड एज यू आस्क कि प्रॉपर गाइडेंस के लिए कौन से कोचेस के पास जाना चाहिए, कौन से ट्रेनर्स के पास जाना चाहिए, आई वुड से आई हैव बीन फॉलोइंग अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल, एंड मैं उनके नाम भी लूंगा यहाँ पे, एंड आई कैन प्राउडली टेक देयर नेम बिकॉज़ आई हैव बीन फॉलोइंग देम एंड आई नो देम कि अगर कर रहे हैं इट्स नॉट रॉन्ग. आई नो देम. मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल में भी वो लोग हैं. आई हैव बीन फॉलोइंग रजत भाई, सनी भाई, जतिन भाई, यश, तरंग भाई, and Dev Lohia. He is one of my favorite athletes. He is my favorite athlete. He is from Delhi, and I am also a great fan of him. क्योंकि जिस तरीके से वो नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, मैंने ऐसे नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन किसी को करते नहीं देखे. अगर आप बोलोगे कि यार अगर आप देव को ऐसा कोई चैलेंज दे दोगे कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर यू हैव टू लुक दिस लाइक दिस वे एट अ सर्टेन वेट, he will do it. He will do it, and he will do it without any gear. I am 110% confident on him. So these are the guys. If you want to go and follow them and ask them for guidance, they are up for training people. They are up. What kind of diet you are having and what supplements you are adding on right now? मेरी डाइट यार आई वुड से बहुत सिंपल डाइट है. मैं दिन में मुश्किल से 2 स्कूप प्रोटीन के ले रहा हूँ, एंड आई एम अप्रोक्सीमेटली आई वुड से 300 grams ऑफ चिकन. एक टाइम मेरा राइस है, एक टाइम मेरा ओट्स है, एंड दिन के 3 अंडे हैं. दिस इज माई डाइट.
इतनी सी मिनिमल डाइट है. एंड द सप्लीमेंटेशन आई वुड से आई एम टेकिंग प्रोटीन स्कूप, मैं आपको बता चुका हूँ, क्रेटीन एंड ग्लूटामाइन, दैट्स इट. How you're feeling from having that steroid cycle and now ultimately to natural diet? I would say when I was taking steroid cycle, while I was on diet and on steroid cycle, I was feeling shit from the outside and from the inside as well. My gut health was completely, was terrible. I wasn't feeling good. But now when I'm on natural diet, I wouldn't say that okay, हर एक दिन natural diet में when you're on deficit diet, you won't feel good. You will be feeling exhausted. You will be feeling like tired all day. But yes, it is far, far, far better than having steroids. Far, far, far better. अगर 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 आई वुड अगेन से, अगर सिर्फ आपका एक एम है फिटनेस, नॉट बॉडी बिल्डिंग. मैं बॉडी बिल्डिंग के कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मैं उस फील्ड में नहीं हूँ, तो कुछ छेड़ूंगा. आई एम टॉकिंग इन जस्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फिटनेस, बिकॉज मेरा करंट एम इज जस्ट परफॉर्मेंस एंड लॉन्जेटिविटी. दैट्स इट. मुझे सिर्फ परफॉर्मेंस से मतलब है और कुछ नहीं. Whatever I'm doing at the end of the day, चाहे मैं डेडलिफ्ट कर रहा हूँ, चाहे मैं रनिंग कर रहा हूँ, चाहे मैं बेंच प्रेस मार रहा हूँ, जो मेरी फिजिक निकल रही है, it's an outcome of what I'm doing. If I'm shredded, if I'm jacked, it doesn't mean कि यार मैं कोई बहुत ही अलग ही तरीके का प्रोग्राम फॉलो कर रहा हूँ. ऐसा कुछ भी नहीं है. मेरा प्रोग्राम इज सिंपल. I follow a simple program, but right now I would say I'm on deficit diet. That's the reason I'm looking like this. Next time अगर down the line 2-3 महीने बाद अगर तरंग भाई मेरे को बोलते हैं ठीक है, it's time to bulk up, or he puts anything in my program and he increases my calories, then my body will be living completely different. There are days when I feel like completely buffed up, but then there are days I completely feel like shredded, jacked and lean. So it all depends on how you're training and what you're eating. That's it. Could you please give any tip, any short, crisp tip towards our viewers and followers? Like Yeah, sure. how तो यही to start? सबसे पहला टिप यही दूंगा भाई, अगर तुम्हारा गोल फिटनेस है, स्टेरॉइड्स मत लो. Simple as that. This is my message to all the young guys and any guy who's watching this video. Don't take steroids until unless your main aim is bodybuilding. अगर आपका फिटनेस है तो नॉर्मल रहो, नेचुरल रहो. दूसरा आई वुड से नेचुरल बॉडी बिल्डिंग भी करना या नेचुरल फिटनेस के पर्सपेक्टिव से भी, इट्स नॉट हार्ड. इट ओनली टेक्स कंसिस्टेंसी. सबसे 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 एक ही चीज अपने व्यूअर्स को, सारे व्यूअर्स को ये चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आप ये सोचते हो कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग या नेचुरल फिटनेस आपके लिए नहीं है, आप नहीं कर सकते, आपको फिजिक 2 महीने में ही बनानी है, तो आई वुड से भाई आप इस गेम से बाहर ही चले जाओ. इट्स बेटर. बिकॉज अगर आप स्टेरॉइड्स यूज करोगे फिटनेस के लिए तो आप फिट नहीं हो रहे हो. आप अगर बाहर से अच्छे लग रहे हो, इट्स वेरी गुड, बट इंटरनली यू आर कंप्लीटली फक्ड. दिस इज व्हाट आई वुड से. यही मेरे तरफ से तो मैं सिर्फ इतना ही ज्ञान दूंगा. एंड अगर मैंने किसी भी व्यू को ऑफेंड करा तो आई एम रियली सॉरी. मेरा वो कोई इंटेंशन नहीं था, बट जस्ट एवरीथिंग आई सेड इज फ्रॉम ओन परसेप्शन. That is what is this called as KBB talks, where we can open up everything and learn from the experiences of others. So coming into the common consensus, I would say there must be change in our education system also. Like in books, starting from the primary schools to coming to the secondary, then to the colleges, there must be education system, good education system on fitness and learning the children about fats, proteins, carb, micros, everything. I would say ये चीज अभी तो मतलब मेरे दूर दूर तक दिमाग में नहीं आती कि इंडिया में ऐसा कभी कुछ हो भी सकता है. आई वुड से मुझे नहीं लगता ऐसा कभी कुछ हो भी सकता है, बट अगर ऐसा कोई इनिशिएटिव आता है देन दैट इज द बेस्ट थिंग. नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ फिटनेस फ्रीक्स, बट इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल पीपल ऑल्सो, जिनको एक नॉर्मल एजुकेशन होनी चाहिए कि उनकी बॉडी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या न्यूट्रिएंट्स एंड क्या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट है. इतनी नॉर्मल चीज को फोकस करना चाहिए लोगों को. And as I said, मुझे down the line अभी कहीं पे भी नहीं लग रहा इंडिया में ऐसा कुछ होगा. So, thank you so much, Mr. Tejas. Thank you so much. You really did well. Open up yourself. Tell viewers about the steroids. क्योंकि आजकल कोई भी स्टीरॉइड ले रहा है वो हर दूसरे से उस चीज को हाइड कर रहा है कि मैं नहीं बताऊंगा बाहर कि मैं क्या ले रहा हूँ. But you are really opened up, and all the very best. And thank you so much. I really wish you all the best with your KBB talks, and I hope you do really great. Thank you so much. Thank you. Have a good day. You too, brother.